हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मैं आपको एक बहुत अच्छे स्टूडेंट से मिलवाने आया हूँ, हाल ही में जिनका रिकमेंडेशन हुआ है। इनका नाम है निखिल डागर जी। सो निखिल, आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द स्टूडेंट्स फर्स्ट सो दैट दे कैन नो कि आप कौन हैं और कौन से एंट्री से आप रिकमेंड हुए। Thank you, sir, for the invitation. And hello, everyone. My name is Nikhil Agar, and I recently been recommended from SSB Allahabad T4, the entry TS49. I was recommended on 16th of March, and I came here to Karthik sir in his new academy, which I would like to congratulate him. And yes, sir, that's all about it. ठीक है, अब निखिल से थोड़ा सा उसकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि देखो, मैं दिल्ली में था तो मैंने सोचा निखिल को बुलाना चाहिए एकेडमी के अंदर एंड यहाँ पर उससे थोड़ी बातचीत करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके निखिल से लाइफ से कि निखिल ने अपने स्टार्टिंग जर्नी की कैसे करी, ये अब जो फाइनल रिकमेंडेशन उसकी हुई है तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, रूट्स क्या थे उसके, तो आर्मी की मोटिवेशन कहाँ से मिली एंड व्हाट वाज द रीजन कि उसने आर्मी को ही चूज किया और ज्वाइन करने के लिए। सो निखिल, थोड़ा सा बताइए कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली, क्या बचपन से आपका सपना था आर्मी को करना या फिर अपने सराउंडिंग जैसे देखी या आपका बैकग्राउंड में कोई था, फादर या ग्रैंडफादर, थोड़ा सा जरूर जो है बच्चों के साथ शेयर करें। About army, I come from a civilian background. घर से कोई मतलब ऐसे है नहीं आर्मी में. And about my motivation मुझे actually मेरे surrounding areas में मिली थी. मैं जिधर रहता हूँ उधर I have seen growing up as a child, everyone they wore a uniform around me because near my village there is CRPF, Central Reserve Police Force Training Academy, college है उनका. तो उधर since I was young, तो उधर trucks and soldiers and men in uniform, I've seen them through. तो उधर से उधर motivation factor I would say उधर से है. Also, I think it was in 9th standard जब one of my seniors, I was in the basketball team back then. तो जो हमारा captain था basketball team का, he's selected now. He was recommended for NDA entry and was the driving factor inside of me. So starting from 9th, I developed an interest towards army, and moving on, I gave this TS recommendation, TS entry exam for the SSB, and this was my second attempt for the SSB. The first was in October last year, 2022, and this was my second attempt for the SSB. My last one was at Bhopal, for which I was conferenced out, and this one from Allahabad, I was recommended. बहुत अच्छी बात बताई है निखिल ने कि उसकी मोटिवेशन कहाँ से थी। तो उसने बोला कि वो अपने फ्रेंड से मोटिवेट हुआ, सीइंग हिम ग्रोन फ्रॉम 0 to 100, तो उसको भी एक थ्रिल मिली, एक एंथुसियाज्म मिला एंड वहां से देयर आफ्टर इट टुक अप फ्रॉम देयर एंड वहां से ये फाइनल आप लोगों के सामने बैठे हैं निखिल डागर जी, जो कि एक फाइनली रिकमेंडेड कैंडिडेट है। सो निखिल, अगर मैं आपसे बात करूं एनडीए के बारे में, तो क्या आपने एनडीए का एग्जामिनेशन दिया था एंड दिया था तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी, व्हाट वर द बुक्स दैट यू रेफर्ड and what was the time period do you require to clear the written part? थोड़ा सा बच्चों को गाइडेंस करिए बिकॉज हमारी मैक्सिमम ऑडियंस जो है दैट इज ऑफ योर एज ओनली, जो कि एनडीए की प्रिपरेशन कर रही है एंड देयर आफ्टर अगर कोई सीडीएस के स्टूडेंट्स भी है तो उसके लिए हम सेकंड पार्ट पे आएंगे, सीडीएस आपकी एसएसबी पार्ट पे। बट राइट नाउ टेल मी कि आपने एनडीए एग्जामिनेशन दिया था तो व्हाट वाज द स्ट्रेटजी, अगर आप डूबे कहीं पर गिरे जिसकी वजह से आपका एनडीए का एग्जाम नहीं हुआ तो व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट? My NDA preparation, I started my NDA preparation. I gave my first attempt in April last year, for which I wasn't prepared much. After that, I gave my second attempt in the month of September, for which I took coaching from your online classes. And I also ordered your book, Arpit Sir's book for maths, and I prepared for it all throughout. I started in April itself. I remember, if I remember correctly, 13th or 14th of April जब बैच स्टार्ट हुआ था, चलकर बैच, yes, तो जब से मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट करा, I was constant throughout, and there's this thing about NDA,
or whichever exam that you are preparing for, कोई भी एग्जाम हो, you have to be constant, you have to practice every day. कोई भी एक डे मिस होता है तो it just starts piling up और पीछे बैकलॉग क्लियर करना it becomes hectic, and keeping up with what is going on, जो आगे चल रहा है उसके साथ भी तुम्हें साथ में चलना है and पीछे वाला भी साथ में लेके, so it's better to keep preparing and working together with what is going on right now. And एनडीए में मैं कहूँगा along with what you are preparing, ये मैथ्स वगैरह, मैथ्स and the other subjects, focus on what are your core subjects and your core chapters. तो जो main chapters है, एनडीए syllabus is vast, so you cannot target every chapter. You need to target only those chapters which are important and which are very easier to understand for you. You have to make your own strategy for the ND exam. The teachers are there to guide you, no doubt. They are very qualified and very good personalities, and they have seen it through, and multiple students have excelled under them. Lekin, what you need to do is you need to prepare your. I wasn't able to clear the September one as well because my preparation it stopped after July, and मैंने पूरा August I couldn't study. तो वो revision factor भी होना चाहिए आपका. You need to give exams on a daily basis. Not on a daily basis, you need to give them in a week or two, which these teachers will organize for their students. मेरा किधर week रह गया is about the revision part, because I couldn't revise all of the chapters and couldn't practice the questions, the different set of questions जो कि UPSC आपसे पूछता है, and there are multiple questions and there are multiple ways in which UPSC asks you the questions, and I would say keep at it, be constant, develop your own strategy about the exam, and you need to revise it as well. So ये है मेरा एनडी का जो मैं सोचता हूँ. With this strategy and your own strategy and covering it up with all this, I think you can get through the exam pretty well. बहुत बढ़िया, थैंक यू निखिल. निखिल ने बहुत अच्छी चीजें आपको बताई है. एंड इफ आई कंक्लूड ऑफ दिस पार्ट, दैट इज फर्स्ट थिंग यू नीड टू डिसाइड इट कि आपके मेंटर्स कैसे. सबसे पहली बात आपको चूज करना है मेंटर्स, बिकॉज आपकी जर्नी के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले जो करना है दैट इज मेंटर्स से करना है. नेक्स्ट इज बुक्स क्या चूज करते हो, बुक्स कौन से चूज कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपकी डिपेंड करती है कि आप रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, जो काम आपको दिया जा रहा है वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. फोर्थ वन अगर हम बात करें that is strategy, क्योंकि निखिल की strategy it may work for him but it may not work for you, but जो आपकी strategy है वो किसी और के लिए काम आ सकती है कि नहीं, वो डिपेंड करता है आपकी strategy के ऊपर. सबके लिए अपने अपने strategy work कर सकती है. फिफ्थ वन इज रिवीजन पार्ट. जब आपका पेपर पास आ रहा होता है, एक बार सिलेबस कवर अप हो जाए तो उसके बाद रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल बात है. ये नहीं कि आगे बढ़ते जाओ और पीछे छोड़ते जाओ, ठीक है ना. आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात नहीं करनी है, तो आगे करते रहना है, बट रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. रेगुलर बेसिस के ऊपर रिवाइज करना इज द मल्टीपल की. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट क्या होता है, आपका एक्चुअल टेस्ट बताता है कि आपने जो प्रिपरेशन करी है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना स्टैंड कर रहे हो. मॉक टेस्ट की बात करते हैं एक बार निखिल से कि उसने निखिल ने कितने मॉक टेस्ट दिए थे, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू क्लियर द रिटन पार्ट. थोड़ा सा निखिल गाइड करिए इसके ऊपर. मैं पर्सनली मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट एवरी 2 वीक्स पे मैं एक मॉक टेस्ट लगाता था, एंड मॉक टेस्ट में इफ यू आर स्कोरिंग अबव 60 to 70% you are good to go because you are still in the process of learning. And I would say mock test आप तब लगाए जब आप चैप्टर में ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हो गया हो, and not only after just one chapter. You need to prepare for mock test because mock test आपको एक preparation देता है for the actual test. So only set a mock test when you are done with 2 to 3 chapters. तो उन 2 से 3 चैप्टर या 3 से 4 चैप्टर्स का आप एक mock test रखिए, जिससे you can revise those chapters. जो पीछे हो चुका है वो भी आपका साथ में चलेगा, एंड ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली कि उसको टेस्ट को आपको टाइम लिमिट, टाइम बाउंडेशन के हिसाब से कैसे अटेम्प्ट करना है, एंड कैसे एक्चुअल जो पेपर आता है एनडी का
उसमें वो कैसे आपको अटेंड करने हैं क्वेश्चंस। तो आपको अपनी स्टैंडिंग का भी पता चलेगा, आप किधर स्टैंड कर रहे हो। व्हेन यू आर competing thousands of students for the exam, and also mock test में मैं जो बता रहा हूँ, दो हफ्ते में ऑलमोस्ट एक मॉक टेस्ट लगाता था। सो इन द प्रोसेस while preparing for the exam you can also cover these mock tests on a weekly basis as well। जितना आपका चैप्टर्स हो गया है तो पूरे वीक का रिवीजन साथ में on a Sunday or Saturday on a weekend you can start with those mock tests, and going throughout these mock tests they will develop into the whole syllabus test। तो जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो you will have something in mind कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके मेन है एंड कौन कौन से चैप्टर्स आपको उन चैप्टर्स में महारत हासिल है। सो जब आपका ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज रह जाएंगे तो आपको पता होगा, आपके पास एक प्लान होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स को ज्यादा टाइम देना है एंड कौन कौन से चैप्टर्स में आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो। तो उधर से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको पहले जो एनडी का एग्जाम होगा उधर कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एंड आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता लगता है विद गिविंग दीस मॉक टेस्ट। निखिल ने आपको मॉक टेस्ट के बारे में भी गाइड कर रहा है कि मॉक टेस्ट की वैल्यू क्या होती है आपके फाइनल स्टेप के अंदर, जब आप फाइनली रिटन एग्जामिनेशन के अंदर बैठने वाले होते हैं उस टाइम पीरियड तक आपके मॉक टेस्ट, उस एक हफ्ता पहले तक आपके मॉक टेस्ट चल रही थी। लास्ट के 1 मंथ जो है आपका सिर्फ इट शुड बी लेफ्ट आउट फॉर मॉक टेस्ट ओनली, बिकॉज यहाँ पर आपको ना टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाती है, वो चीजें आपको सिखाता है मॉक टेस्ट। एक्चुअली बेसिकली पेपर लाइक सिचुएशन आपको फील करती है। अगर आप टाइमर लगा के बैठेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप जो है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हैं, और धीरे धीरे फियर ऑफ लूजिंग जो है वो आपको कम होता रहेगा। तो मूविंग फॉरवर्ड हम जो है बात करेंगे अब एसएसबी के बारे में कि निखिल आप ये मुझे बताइए कि आप कौन से बोर्ड से रिकमेंड हुए, कौन से टाइम में रिकमेंड हुए, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कि एसएसबी का होल सिनेरियो जो था वो फीलिंग कैसी आ रही थी? वाज देयर अ फीलिंग ऑफ लूजिंग, was there a feeling of missing out, was there a feeling of getting rejected? कैसी सिचुएशन थी जब आपकी कॉल लेटर आई, उसके बाद क्या सिनेरियो था, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जब मेरा कॉल लेटर आया था I wasn't even in Delhi, I was there in Nagpur, I was preparing for SSB itself। मुझे पता था कि SSB आने वाली है but we weren't informed about the dates। While I was there at the hostel in AFPA, so all the students around us, उनका भी like 3 years entry था, तो they informed me कि dates आ गई है। So I called back home, I told my father कि dates आ गई है and we have to choose a date for DS entries। So the center was allocated Allahabad। तो पूरे उधर students they had got Allahabad as the center at AFCO, and उधर शोर समझ रखा था कि इलाहाबाद तो रिजेक्शन सेंटर है। तो मुझे भी नहीं पता था because I was focused on choosing a for the ahead of all the other dates because तब रश कम रहेगा and फिर होली भी आने वाली थी, तो I wanted to go for a earlier date, but फिर मैंने पापा को फोन किया and my father he wanted me to choose a date after Holi because पापा को खुद उधर संगम में स्नान करना था। I couldn't choose the date, it was allotted itself। मुझे allotted हुआ था 12 to 16th of March, and for which I'm also very happy now because I was recommended in that period। So I started my journey on 10th। At night we left Delhi and we reached Allahabad, Prayagraj on 11th in the morning। We stayed there and on the 11th evening we went to Sangam, took a bath, my father and I। Then after that on 12th I remember 3:30 बजे मेरे पापा ने उठा दिया मुझे get ready। फर्स्ट डे आप भागम दौड़ी में रहते हो because you're always on your footsteps only। yeah,
सो फादर साहब भी एंड पूरी फैमिली को ये था कि बेटा उठ जाना, तो मम्मी भी कॉल कर रही है उठ के आना कि शी वाज बैक इन दिल्ली। तो अ, तो मैं 3:30 बजे उठा, कुछ खाने को भी नहीं था, सो आई दिस जूस विद मी। तो जूस पी के स्टेशन पे रिपोर्टिंग थी, तो स्टेशन पे रिपोर्टिंग करने के साथ ही आई मेट स्टूडेंट्स ओवर साथ वाले कलीग्स, they were about to go for the SSB with me, so I met around 5 to 6 students and we left the station in a bus, मेरी बस पिकअप करने आई थी। So we left the station and then reached SSB Allahabad, केरियापा द्वार से वो उधर ही है। Actually cantonment area में as soon as you reach cantonment area you'll feel like कि वाइब अलग हो जाती है, पूरी वाइब अलग हो जाती है, इतनी ग्रीनरी रहती है, इतना पीसफुल रहता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। तो बस स्टॉप दिस and we were standing in a queue as far as I remember. There were around 50 students who were standing in the queue with me. बाकी बच्चे और भी आ रहे थे अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। तो हमारी एंट्री हुई, हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए एंड जब हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे उस दौरान मैंने देखा कि जब हमें मल्टीपल लाइंस में खड़ा कर रखा था तो एंड वो भी बच्चे थे जो मेरे पिछले एसएसबी में थे, मेरे साथ ही, एंड रिपीटर्स वी वर एंजॉयड, मतलब देख के अरे तू उधर ही था तो उधर देख के उनको देख के भी खुशी साथ में ही है। मेरा क्या था कि पिछला जो एसएसबी था उसमें आवर होल बैच वाज तो साथ में देख के एक पॉजिटिव फीलिंग भी आई थी कि साथ में है दोबारा फिर से। उसके बाद we were divided, the reporting was we were 67 की रिपोर्टिंग थी एंड तो उसके बेसिस पे बस we were divided into the freshers and screen out वाले भी उसी में जोड़ देते हैं and the repeaters। तो I was there in the repeaters थे 17 of us were repeaters। तो फर्स्ट डे जो टेस्ट होते हैं दे आर OIR officers intelligence rating and perception and discussion test। तो उसके लिए we repeaters were divided in a separate group, 17 of us in a single group and उसके बाद repeaters और screen outs का साथ में था। I remember हमें एक पिक्चर दिखाई थी, उस पे पूरे 17 बच्चे एक छिड़े हुए थे, जंग छिड़ी हुई थी कि ये मेरी। That was also a good experience and after the discussion was over हम सभी speculate कर रहे थे कि तो screen out काफी अच्छा लग रहा था। I wasn't under any pressure, मेरा ये था कि जो होगा नसीब में देख लेंगे। बाकी I had done well, I had done my OIR and my discussions good, they were good to my understanding। बाकी जब रिजल्ट आया तब साथ में ही थोड़े थे वो अनाउंस करते हैं just number this and this and we are asked to acknowledge it। तो we ran towards our luggage, we were told to bring our luggage back as soon as our chest numbers were told। तो जो freshers थे and they were तो उनके चेहरे पे एक अलग खुशी होती है, एक अलग रौनक होती है, जैसे पूरा जग हासिल जहान जीत लिया। तो वो आंखें मेरा हाथ में ला रहे एक्साइटमेंट। आई रिमेम्बर मेरा जो पहला एसएसबी था उसमें वो अपने पेरेंट्स से बात करके सबको होगी, आप भी सुन। खुशी महसूस करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही था। उसके बाद हमें अपने पेपर्स फिल करने रहते हैं, काफी लंबा प्रोसेस होता है। उधर ही एसएसबी ऐसा लगता है कि किधर आ गया है जो पेपर वर्क होता है। उसके बाद
left, we were dropped at our SFB जिधर stay करना था हमें, हमारा hostel. I was from 11 SSB, 11 SSB. चुशल आपका, अगर आप कभी जाएंगे तो आपके hostel का नाम होगा चुशल. तो hostel में भी अलग सी vibe रहती है. वो भी अराउंड 5 बजे हमें हमारे रूम्स दे दिए गए थे, अलॉटमेंट हुई थी हमारे रूम्स की. तो हम सारे रिपीटर्स एक ही रूम में थे. तो हमारी बेडिंग दे दी गई थी. उसके बाद राइट आउटसाइड योर हॉस्टल वी हैव दिस बास्केटबॉल एंड दिस वॉलीबॉल कोर्ट. तो उधर क्या होता है कि हर एक एंट्री से बच्चे आते हैं. तो हमारे साथ there were senior entries as well and हमारी TS entry के बाकी बोर्ड्स के स्टूडेंट भी थे. तो एक environment वो मिलता है कि everyone is aiming to become a soldier, everyone is wanting to be joining army. तो उनका पैशन वही रहता है कि आर्मी. तो बात भी उसी लेवल की होती है. बाकी you'll find your mates, you'll find everybody who's with a like-minded approach. It is important you should stay with like-minded people only. Yes, that also gives you a feeling Positive of joy approach and joy as well. easiness हो जाती है. I would say when you are in SSP, keep it simple, keep it very smooth. ये नहीं है कि आप pressure build कर रहे हो. Talk to people because when you talk to others, तुम्हें पता लगता है कि उनकी life and वो भी इंसान है, कोई वो भी pressure में सबके ऊपर pressure होता है. and it is not only you, it is them also. सबका लाइफ एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम ही होता है एट दिस एज. मतलब एक्सपीरियंसेस डिफरेंट रह सकते हैं लेकिन स्टोरी सिमिलर पाथ पे आके रुक रही है. सभी एसएसबी में पढ़े हैं. तो उधर एज मच एज यू इंटरेक्ट विद पीपल, उधर जाके तुम्हें पता लगेगा कि दे हैव डन दिस टेस्ट बिकॉज़ डिफरेंट एज पे एंट्री होती है, डिफरेंट बैचेस की. तो you will get to know, you will get to hear their experience. You are also getting to interact with those who have already been recommended. तो जब मैं उधर पहुंचा था तो मेरा एक आर्मी तो मैं उधर पहुंचा तो मुझे ऑलरेडी पता लग गया था कि रिकमेंड हो गया है. तो मैंने बात की एंड ही टोल्ड मी क्या अप्रोच उसने लगाई थी, कैसी मुझे एडवाइस की थी. तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट डे. हाँ, ये हुआ था कि आई वाज वेरी सरप्राइज कि मेस में जाते टाइम वी हैड टू वेयर फॉर्मल्स बिकॉज़ एसएसबी का सिनेरियो है. हर टाइम हर एक चीज आपकी ध्यान रखी जा रही है. ऐसा कुछ नहीं है एवरी टाइम यू हैव एन आई ऑन देम, दे हैव एन आई ऑन यू. तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी भी टाइम फॉर्मल्स में आ जाओ, किसी मतलब कैजुअल्स में आ जाओ या किसी स्लीपर्स में कर लो या कोई मस्ती मजाक कर लो. हमेशा आप सर्विलेंस के अंदर ही. आपको लग रहा होता है कि आप नहीं देखे जा रहे बट एवरीथिंग ऑफ योर्स इज बीइंग वॉच्ड बाय देम. सर ने बिल्कुल ठीक बात बोली है बिकॉज़ आई वुड लाइक टू नरेट एन इंसिडेंट. out of the hostel. तो right outside our hostel there was this bench and ऐसे ही हमारे hostel के बच्चे बैठे थे during the afternoon. तो मैं भी ऐसे बाहर निकल गया अपने slippers में. तो I was also discussing with them what they were discussing about. फिर बातों में पता ही नहीं लगा मेरा भी ध्यान कहीं और था. थोड़ी देर बाद पता चलता है कि somebody had observed me and he called me out. Just I'm 16 का मैं. So I went towards him. मुझे पता लग गया था कि तो नोटिस में मिले थे कि you issues आपसे. तो sorry sir. Sorry कुछ नहीं होता है. And the Trajan sir also he told me once कि उसमें sorry कुछ नहीं होता है. तो एक एक्सपीरियंसेस के बारे में ये तो बात था स्क्रीनिंग का पार्ट. तो स्क्रीनिंग के पार्ट के अंदर थोड़ा सा मैं और इलैबोरेट करना चाहूंगा. सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द पिक्चर कि यहाँ पे आप लोगों को पता है क्रेजी सी पिक्चर दी जाती है, पार्ट और फिर उसका पीपीटी होता है. सो निखिल आपकी जो पिक्चर थी
उससे आपने क्या एनालाइज किया, बिकॉज इट इज अ वेरी हेजी पिक्चर, अब उसको क्लियरिटी नहीं होती वहां पर। आप क्या इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि वहां से वो पॉजिटिव आपने ली चीज को या नेगेटिव ली, क्या नेगेटिव स्टोरी हम इंटीग्रेट करके उसको नरेट कर सकते हैं, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन जीडी? तो वहां पर ऐसा मिथ होती है कि आपको सबसे पहले बोलना पड़ चाहिए या फिर आपको स्टोरी की कंक्लूजन देनी चाहिए, वाज इट समथिंग लाइक दैट, या फिर सिर्फ एसएसबी के अंदर बोला जाता है कि इंग्लिश में ही बोलो? तो ऐसा कोई सिनेरियो था या आपके बैचमेट के अंदर कोई था जिसने हिंदी के अंदर में नरेशन दी है एंड ही इज आल्सो रिकमेंडेड, तो कुछ उसके बारे में थोड़ी सी बताइए। अबाउट द हेजी पिक्चर, मेरे आई थिंक वो इतनी हेजी नहीं थी ड्यूरिंग दिस बोर्ड, बट इन माय लास्ट बोर्ड इट वाज डेफिनेटली हेजी। पिछले बोर्ड में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, हार्डली वी वर एबल टू स्पेसिफाई आदमी भी खड़ा है या नहीं। तो about this board, there was this man sitting, and around three females, they were surrounding that person. उसके सर पे कुछ कपड़ा था, and another man, it looked to me that he was treating the older person who was sitting on the chair. So I made a story around him organizing a health camp for the elderly, and as sir asked me कि पिक्चर को देख के क्या नेगेटिव जाना चाहिए या पॉजिटिव जाना चाहिए, आई वुड से रादर स्टे ऑन द पॉजिटिव साइड, बिकॉज एक पॉजिटिव माइंड के साथ यू कैन मेक योर फर्स्ट पर्सन, द पर्सन you are making the protagonist himself as the hero, because you क्या देखते हैं आपका in SSB, they see if you are relating with the character that you have chosen as your main protagonist of the story. So you have to see yourself. तो उधर साइकोलॉजिस्ट आपको जज कर रहा है कि आप पॉजिटिव रहते हो, नेगेटिव रहते हो in a given situation. If you are seeing the person as he's in negative mood, तो it isn't necessary कि आप forcefully उसको positive दिखाने में लगे रहते हो. तो you have to build a story which is inculcating of values and which is showing your efforts and actions, because वो जो at the end जो person होता है, it is usually you are depicting him as yourself. तो ये तो बात रही हमारी जो राइटिंग पार्ट है उसका। उसके बाद हमारा जो डिस्कशन पार्ट आता है, as I mentioned, myth रहती है कि जो ज़्यादा बोलता है कब बोलना चाहिए, एंड जो कंक्लूजन दे रहा है वही सेलेक्ट होते रहेगा। तो I would say to burst all the myths, it is not necessary to speak first. It is not necessary to speak at the end या बीच। What it is necessary to take part in the discussion rather than just going blabbering about something जो तुम्हें आता ही नहीं है, या फिर तुम continuously एक चीज को repeat कर रहे हो। That is not going to take you anywhere. You have to contribute towards the group. The group is not your enemy या फिर तुम्हारे rival नहीं है वो। The group is your family. तो जैसे तुम एक नुक्कड़ पे बैठ के दोस्त लोग बातें करते हो, तो वैसे बातें होती है डिस्कशन में। You have to take part. You have to lead the group in a positive direction, या फिर towards a story which is rather more understandable and rather which is more suited as an approach. एक conclusion आ जाए जो better suited है in a better direction. You have to guide the group in a better direction, I would say. And जितना मैं बीच में, it is always necessary to speak when others are not speaking. बीच में आपको कभी भी मौका मिलता है, एक बिल्कुल छोटा सा सेगमेंट आता है में कि पूरा ग्रुप चुप रहता है, and if you speak during that time, तो कोई आपको नहीं रोकेगा, and सब पूरा का पूरा ग्रुप आपकी बात सुनेगा। ये मेरे साथ हुआ था इस वाले में भी एंड पिछले वाले एसबी में भी, कि वो जो मौका होता है वो बस हासिल कर लेना है। तो उस मौके पर बोलना है, that is more than enough. Let the assessors know कि आपका माइंडसेट क्या है एंड आप किस लेवल का कैंडिडेचर उनको शो करना चाहते हो। तो इतना बात है, ये जीडी की बात है। तो ये जीडी में बहुत अच्छी बात निकलने बताई। एक एग्जांपल जो उसने दिया वो नुक्कड़ वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
कि आप जब नरेट कर रहे हो ना अपनी स्टोरी, तो इट शुडंट साउंड लाइक कि आप एक्सेसर्स को जो आपने स्टोरी नरेट कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में जैसे मैं निखिल बैठे हुए ऐसे बात करो, सामने कभी भी आपका आई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए एक्सेसर से, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे को दिखावा करने के लिए स्टोरी अपनी नरेट कर रहा है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर उसको ये लगेगा अगर कि भाई मुझे ही सुना रहा है तो आपको मिनट से पहले आउट कर देगा। इट शुड फील लाइक कि भाई आप ग्रुप के लिए काम कर रहे हो, आपकी टीम वर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मूविंग फॉरवर्ड निखिल, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके इंटरव्यू के ऊपर। तो आपको पता होगा क्या, पीआईक्यू फॉर्म जो है वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पीआईक्यू फॉर्म भर रहे होते हो ना, क्या क्या चीजें बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए? जो आपने पीआईक्यू फॉर्म भरा होगा, आपने क्या क्या चीजें ध्यान में रखी थी? बिकॉज आपका जो आईयू का इंटरव्यू होता है, मतलब एंट्रिंग ऑफिसर जब आपको बिठाता है, आपके पीआईक्यू फॉर्म के ऊपर ही आपको जज किया जाता है। जो आपका एक पन्ना जो होता है उसी के ऊपर आपकी सारी डिटेल्स होती है, आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट, सब कुछ बेसिकली है जो वहीं से ही पहचान लिया जाता है। तो आपने पीआईक्यू फॉर्म को मतलब कैसे फिल इन किया था? बच्चों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए अपने इंटरव्यू के दौरान और पीआईक्यू फॉर्म को भरते हुए? और रैपिड फायर क्वेश्चंस जो थे आपके, तो क्या सेशंस रहे थे, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पुट इन किए थे? तो दो तीन सवाल आपको जो मैं भी रैपिड फायर की तरह पूछ रहा हूँ। Before I move forward, I think जो भी watchers होंगे उनका doubt रह जाएगा. I didn't include it because वो rapid fire में भूल जाते हैं. I would like to include the हिंदी वाला part. क्योंकि काफी watchers लैंग्वेजेस बहुत insecure होते हैं about language, हिंदी आती है बस. तो as soon as you enter SSB centers, तो आप हर जगह boardings देखोगे कि उधर लिखा रहता है it is not. आप both languages use कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश. And be fair to you, in my last SSB there was this person, another student, उसने अपना narration ये PP and even in the GDs during SSB during G2 task उसने वो भी हिंदी में. तो ऐसा कोई bias नहीं है कि इंग्लिश बोलनी है, हाँ, कोई ऐसे कोई बैरियर नहीं है कि इंग्लिश यूज करनी है या फिर हिंदी यूज करनी है. यू कैन यूज बोथ द लैंग्वेजेस. एंड कमिंग टू माय आईओ पार्ट, माय इंटरव्यूइंग ऑफिसर में जो लिया था, तो मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया था. एंड माय इंटरव्यू वाज टेकन बाय द बोर्ड प्रेसिडेंट एंड द स्टूडेंट्स दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड. जिनका फर्स्ट डे होना था, जिनका सेकंड डे होना था, थर्ड डे होना था एंड फोर्थ डे होना था. आपका कौन से दिन हुआ था? मेरा लास्ट डे था एंड देयर वर ओनली 2 ऑफ अस जिनका लास्ट डे था. बैच वे वर 3 ऑफ अस. बैच का हो गया था तो सिर्फ हम दो बचे थे, मैं और मेरा दोस्त. जस्ट हम 16 एंड 17. तो सर ने प्रेसिडेंट सर ने बिल्कुल आराम से इंटरव्यू विदाउट इन प्रेशर, मतलब कोई भी ऐसे कोई जल्दबाजी में नहीं किया था. तो as soon as I entered the room, he asked me to sit. तो कि कौन से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं. यू नीड टू प्रिपेयर इन एडवांस. ये नहीं है कि आप मुंह धोया के एसएसबी चल दिए. इफ यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम, इफ यू आर preparing for the SSB, you need to the right direction. या तो आप there are multiple videos, you need to purify them. I would say purify because पूरा एक जंगल सा है SSB के ऊपर and there are lot of myths कि first day बाहर हो जाते हैं, second day हो जाते हैं. ये काफी सारी myths है. तो एक particular videos जो होती है छान के निकालना आपको. If you work upon that, तो आपको आइडिया ऑलरेडी लग जाएगा कि एसएसबी में पूछा क्या जाता है. एंड अबाउट द इंटरव्यू, बट योर सेल्फ असेसमेंट फ्रॉम योर ओन सेल्फ, फ्रॉम योर ओन माउथ टू अ सेकंड पर्सन, ये होता है आपका पूरा इंटरव्यू. तो कमिंग टू माय पीआईक्यू, there is this form that you are asked to fill on the very first day, जो मैंने मेंशन किया था पेपर वर्क के बारे में. तो इस क्वेश्चनर में आपका पर्सनल हिस्ट्री आपसे बेसिकली पूछते हैं इन द फॉर्म कि
आप आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अबाउट योर फादर, अबाउट योर मदर, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपके फादर की ऑक्यूपेशन, मदर की ऑक्यूपेशन, देयर इनकम, योर सिबलिंग्स उनके बारे में, एंड ऑल्सो योर एज, आपका हाइट कितना है, वेट कितना है। इससे ऑलमोस्ट उनको आइडिया लग जाता है कि जो कैंडिडेट है उसको अपने बारे में खुद कितना पता है। एंड इफ ही उसके बाद ऑन अ सेकंड पेज यू हैव सेक्शंस रिलेटेड टू योर अचीवमेंट्स। एनसीसी से रिलेटेड रहता है आपकी, और ये जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, हॉबीज होती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। एंड ऑल्सो अबाउट योर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज। इन केस यू हैव गिवन एनी अदर एसएसबी, उससे रिलेटेड भी एक सेक्शन रहता है। तो इन सब डिटेल्स को पढ़ के द इंटरव्यू गेट्स एन आइडिया ऑफ द कैंडिडेट। और आपको इंटरव्यू रूम में जाने से पहले वेट करना पड़ता है अराउंड 10 to 15 मिनट्स। तो जो इंटरव्यूअर होता है वो अराउंड 5 मिनट्स का टाइम लेता है आपको स्टडी करने के लिए कि कैंडिडेट में है क्या। तो ही प्रिपेयर्स दोस क्वेश्चंस in advance to get an idea of the candidate. As soon as you enter the interviewing room, तो उधर बैठा के आपको he'll get you familiarized, and क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स काफी प्रेशर में होते हैं तो उनको वो एक इजीनेस देने के लिए he asked what hotels did they stay and how has been the stay so far. So here when the candidate is well settled and when वो comfortable level पे आ जाता है, the interviewer he usually asks them questions related to their family, personal life, and then their activities they have taken part in, their extracurricular activities, their educational qualifications, and also about their interests, what favorite subjects, teachers, their friends, family, and also about army. And इंटरव्यू में ये एसबी के बारे में मेथ होती है कि आपको this is not a test of your knowledge, but what I would say is knowledge is you yourself. तुम होते हो, that makes up your personality, because SSB only is a test if that person is right for the army, navy, air. So I would say read newspapers. इंटरव्यू को अच्छा करने के लिए you need to read news. You need to have idea about the organization that you are going to join, because you are taking this thing as your career in future, and अगर तुम्हें idea ही नहीं है तुम what you are getting yourself involved into, then that is obviously going to make a bad impact of yourself in front of the interviewer. So have a basic idea about the organization structure and the basic idea of the organization that you're going to join. उसके बाद as I mentioned आपको national news पता होनी चाहिए। उसके लिए newspaper is a must. National news, international news. You can also ask you about our personal opinion about different things. मुझे पूछा गया था G20 के बारे में, G20 which is still in news. G20 summit के बारे में obviously read before latest current affairs जो ongoing current affairs चल रहे हैं उनके बारे में। और उसके अलावा there are multiple organizations, international organizations है, SAARC हो गई, ASEAN हो गई, and आपका ये relations हो गया, Indo China, Indo Pak। तो उससे not only from a SLB perspective, but it also increases your knowledge about the geopolitical situation. And geopolitics पढ़ के आपको क्या आइडिया मिलता है, आपको ये पता लग जाता है कि दुनिया में हो क्या रहा है, and you can also relate it to different, include it in different things. Because GPO में जो लेक्चरेट देते हैं उसमें मेरा टॉपिक था इंडियन इकोनॉमी, and starting from independence I also included SAARC in the Indian economy, because it gave India the freedom to trade between the SAARC countries without any sanctions.
तो that makes your more qualitative. तो ये सब you can include, and this is definitely supposed to help you in the interview. निखिल, मूविंग फॉरवर्ड, इफ वी कम टू जीटीओ टास्क्स, जीटीओ आपका बहुत बड़ा कवरेज होता है, बहुत सारे टास्क होते हैं उसके अंदर, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, कमांड टास्क, जीपी, बहुत सारे एफजीटी, एचजीटी, बहुत सारे टास्क होते हैं. सो अगर आप एक एक करके उसको डिफाइन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं सिर्फ फट्टा बल्ली टास्क की, जिसको हम कहते हैं रोप और जो फट्टा बल्ली लगाते हैं, जो उससे पहले आपको जो जीटीओ ऑफिसर होता है वो थोड़ा सा इलाबोरेट करता है कि भाई हमारा है क्या जीटीओ, कि कैसे अप्लाई करना है. तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स की, तो हाउ वाज इट, आपने कितने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल परफॉर्म करे, एंड क्या अगर आपने करे तो वो उनको रिपीट कर पाए, तो क्या सिनेरियो रहा था ओवरऑल, क्या आपको जीटीओ ऑफिसर नोटिस कर रहा था, हाउ वर यू डूइंग, हाउ डिड यू परफॉर्म इन जीटीओ, थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज दीजिए. तो अबाउट जीटीओ सेगमेंट हमारा वही एक टेस्ट है जो हमें 2 दिन लगाने पड़ते हैं जिसपे, एंड जीटीओ ऑफिसर इज एज द नेम सजेस्ट ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है. तो ही इज जजिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन अ ग्रुप. तो वही एक टास्क होता है जो आपको एट पर्सनल लेवल जज कर रहा है एंड इन अ ग्रुप जज कर रहा है. सो दे आर बेसिकली टेस्टिंग योर कोऑपरेटिवनेस विद योर अदर फेलो मेट्स. तो वही आपको एक ग्रुप में आप कैसा काम कर सकते हो, वही चीज जो एक नीडेड है फ्रॉम अ जो आगे जाके फोर्सेस में काम करेगा एंड एक पूरी बटालियन एंड एक पूरे ग्रुप को लीड करेगा, नॉट पर्टिकुलर बटालियन. एंड ऐसे में एक ग्रुप में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. 10 इंडिविजुअल टास्क, नंबर फ्रॉम 1 to 10, एंड हर एक इंडिविजुअल टास्क के आपको नंबर मिलते हैं. whichever number that they are representing, उतने ही उसको परफॉर्म करने के आपको नंबर मिलते हैं. So during that, the GTO takes us from every individual obstacle. तो उधर starting from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, there are 10 numbers of obstacle. So when you start, the GTO whistles and he asks us to stand in front of the obstacle that we are going to perform. And GTO ऐसे में क्या देख रहा होता है हमसे, what he expects out of us is that we are moving with a strategy, not just blindly कोई भी task complete कर रहे हैं, कोई भी obstacle को undertake कर रहे हैं, इसको perform कर रहे हैं. He expects us to perform a strategy because उससे पहले perform करने से पहले हमें 1-2 मिनट का टाइम देता है just to let us analyze and formulate our own path, क्या take करना है हमें. तो उसमें most of the students and most of the candidates they make this mistake कि number 1 से start कर देते हैं, not analyzing properly कि उनके path में number 1 इधर हो या उधर हो. पहला number 1 and 2 उधर हो तो वो पूरा distance cover कर. It's better to undertake the high ranking obstacles first because last में अगर कोई छूट भी जाए तो वो छूटेगा तो 1-2 नंबर का है. I was able to do 9 obstacles and ये भी मैथ में बर्स्ट कर देता हूँ कि जितना आप obstacle करोगे उतना ज़्यादा अच्छा, कितने रिपीट करोगे, because हमारे साथ जो recommend हुए थे उन्होंने 5-5 obstacle वाले भी recommend हो रखे हैं. तो it is not necessary to complete every obstacle. हाँ, it is better to show your stamina, your physical stamina, because that is obviously a plus point, but it is definitely not necessary कि आप माचो बन के repeat कर रहे हो and you are hurting yourself in that process. So it is better to undertake the high ranking high marks obstacles first and then come to those which are low marking. And this all it takes about 3 minutes. सारे complete करने रहते हैं. And in my own group there were people who तो वो भी लास्ट में जाके कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई
तो it is more important to formulate a strategy than going just blindly for that. बहुत बढ़िया निखिल, निखिल ने बहुत अच्छी चीज आपको बताई है. So moving forward, निखिल, how was your command task? Command task के अंदर आपको किसी ने चूज किया? Was it because of your ability or was it कि आप physically fit लग रहे थे? क्या चूज किया या नहीं किया? So what was it? Tell me. Of my fellow candidates, they have chosen me, and I think it was more of because of my interaction with them during the whole stay and how we were able to talk about different things with each other. जिन दोनों चूज किया था वो दोनों भी मेरे साथ ही रिकमेंड हुए थे and we were good with each other and fellowship थी हमारे अंदर. buddies तो Like the same army buddies. So, to perform our command task, we are asked a set of questions by the GPO. काफी लोग इसको mini interview भी बोलते हैं. तो वही होता है. GPO is just trying to make you comfortable around the task and also getting to know get to know a little idea about what GPO थी. And she took me to the task while talking. She asked me about where I had come from and who I was, who all members are there in my family. So, ऐसे करते करते we reached the task and she explained the task to me. So there were two approaches for the task. Later on, she asked me if I had any doubts. बाद में I told her कि no doubts ma'am, and I was provided with 2 balli and 1 patta. She sat there in a corner after explaining the task to me and told me to call out my subordinates. So I called both of them. They came there and as soon as they were there, the GTO, she told me to start. And I just took the balli and the fatta. I told them मैं उसको balli को फंसाने में लगा हूँ and task में उसमें obstacle में फंसी नहीं रही है. After observing me for around 1 minute, मैम बोलती है there is another approach gentlemen, would you like to take that? So I looked at the other approach. तो मैं second approach की तरफ गया and I told my subordinates. I had two ideas. I went there, I adjusted the balli, 2 of them, and I asked my subordinates to put the plank, the fatta, बीच में लगा देना. And ऊपर मैंने एक दूसरी बली रखी तो एक ब्रिज बन गया था. There was another stepping stone and ऐसे करते करते helping material के साथ we were able to reach the other end. इस दौरान क्या होता है कि GTO helps I get your idea. If you put the idea into formulation, action, the GPO gets your point and lets you have lets you move to the other stepping stone. तो ऐसे करते करते मेरा task complete हो गया था and I was able to do it without any hindrance. अगर वो दूसरे वाले का बताते तो अच्छा. बहुत अच्छा. So GTO did all you can say is that GTO बहुत अच्छा हो गया. ठीक है. So going forward, last day आपका जैसे कि आपने बताया इंटरव्यू हुआ. So when you came out, what was the feeling and while you were waiting for the results, तो कैसा फील हो रहा था? आपके साथ के जो फेलो मेट्स थे, क्या उनकी सिचुएशन ऐसी थी? And have you ever thought उस टाइम पे कि आपको कैसी फीलिंग आ रही थी? आपको लग रहा था कि आप रिजेक्ट हो गए या आप सिलेक्ट हो गए? So what was the feeling at the time of final results? जब चेस्ट नंबर कॉल आउट करते हैं और वो बाद में कहते हैं कि सब लोग एक तरफ हो जाओ और बच्चा लोग एक तरफ हो जाओ. So what was the feeling? How was you feeling that time?
काफी एक फीलिंग ऑफ जॉय थी मेरे अंदर कि काफी अच्छा लग रहा था। तो मैं बाहर आते ही आई वेंट बैक टू माय हॉस्टल एंड उधर मेरे फेलो मेट्स वो सो रहे थे। ऐसे भी कुछ करने को नहीं होता ना, फोन से होते हैं एंड भरी दोपहर में कोई वॉलीबॉल, तो दे वर स्लीपिंग एंड आई टोल्ड देम कि इंटरव्यू हो गया। उसके बाद पूरे दिन I went to different rooms, different hostels, I interacted with different people because last year था, तो हमारे बाद के भी बैचेस आ चुके थे, तो उनके साथ भी गुफ्तगू करने चला गया था मैं। तो ऐसे में ऐसे करते करते पूरा दिन 4 डे was over and 5th day हमें बैग पैक्स करने थे अपने सुबह सुबह and we had to move out वेकेटा हॉस्टल। तो ऐसे बैग पैक्स हुए, अपने दोस्तों को ऐसे झपकियां कर रहे हैं, बैग्स को रखते ही we were made to sit in a room and it was the waiting room right outside the conference room, conference hall। जब हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कॉन्फ्रेंस में a U-shaped bench and those all officers they have judged us throughout the SSB। तो ऐसे में we were 23 of us and हमारे चेस्ट नंबर्स लास्ट से स्टार्ट हुए थे from 23 up till 1। तो जो फ्रेशर्स थे we repeaters होता है कि पिछली बार ये गए बदला अब की बार भी फाइट पुट ऑन की है एंड उसका रिजल्ट कुछ मीठा ही आए, फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए मुझे। वही हमें एक्सपेक्ट रहता है एंड वही जो वेटिंग रूम था उधर बैठे बैठे कॉन्फ्रेंस कितना लंबा चला था आपका? उस पे मैं आऊंगा, मुझसे पहले था एंड उसका वेटिंग टाइम था 25 मिनट्स, अबाउट 25 मिनट्स के। वो अंदर गया तो वो अंदर गया, he was out in about 5 minutes। He told me कि this situation yeah and I thought मेरा नंबर भी जल्दी आ जाएगा। Then again a wait of about 20 minutes and then I entered the conference room and the Bethage sir asked me about my phone because जो मेरा इंटरव्यू था उसमें I mentioned about computers, it was my favorite subject, so I had shared some knowledge about it with the president। So asking me about my phone, how many apps do I have? So I told sir, sir, I have about 30 apps। So then he asked me about what apps do I use the most. Then I told him about it and what do you do on those apps. I told sir about it. Then those same questions which they ask, how was the stay, how was your journey, how was your food, how was the overall experience, how much do you rate yourself? I rated myself 8.5। Then he told me thank you and asked me to leave the room। So it was all about like 5-10 minutes only. No, the visit lasted about 2 minutes because ये मुझे इसलिए पता है because जो मीटिंग रूम में वेट कर रहे थे उनके पास एक वो मैंने देखा नोटिस है कि कॉन्फ्रेंस इसका 2-4 मिनट में खत्म होता है, या तो बिल्कुल बाहर है या वो सिलेक्टेड है। इट इज ऑन ईदर साइड, दोनों साइड मतलब 2 मिनट, जिसका 20-25 मिनट दैट इज ऑन बॉर्डर लाइन। 15-20 मिनट का जिसका टाइम हम ले रहे हैं उसको बॉर्डर लाइन पर डिसाइड करने वाला है। एक साइकोलॉजिस्ट से इंटरव्यू एक साइड पे वो साइड में लिखते रहते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली राइटिंग या थोड़ा सा जिसकी बॉर्डर लाइन केस हो उसकी वजह से ज्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। वही मैंने भी सुना है, जितना हमने सुना है होता है। And from my teachers at AFPA, they have told me the number of situations that they put right in front of you, they are testing those particular candidate and those particular qualities which they have not been able to judge properly, and they are doubtful that the candidate have those qualities। So I assume
myself to be on a safer side because I wouldn't ask such questions and questions I wouldn't put to them. यही था मेरा कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस. अच्छा, सो कॉन्फ्रेंस डिड वेल, ठीक है. उसके बाद जब फाइनली आपका चेस्ट नंबर अनाउंस करने का टाइम आया, सो व्हाट वाज द फीलिंग? वाज देयर अ फीलिंग ऑफ फियर? वाज देयर अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट? वाज देयर अ फियर ऑफ लूजिंग? मतलब क्या फील कैसा हो रहा था उस टाइम पे? डर लग रहा था कि यू वर ऑन योर टोज? कैसा फील हो रहा था? एंड फाइनली जब अनाउंसमेंट हुई तो उस टाइम पे कैसा लगा पहली बार रिजेक्ट होकर? तो डिफरेंस क्या फील हो रहा था पहली टाइम रिजेक्ट होकर और दूसरी बार सिलेक्ट होकर? जब रिजल्ट आने वाला था तो I was just thinking कि हमारे बोर्ड की हिस्ट्री क्या रहेगी because इलाहाबाद में there are multiple boards and every board is हर बोर्ड की एक अलग हिस्ट्री रहती है कि वो कितने recommendations देता है, कितने selections देता है, कितना lenient. इससे पहले हमारे कोई बैच नहीं हुआ था in the 11 SSB, तो there we had no idea. Comparing it with my last SSB, मेरा last SSB was in भोपाल, 20 SSB. तो उधर we were made to sit in the waiting room and by announcing the result, एक officer आता है with a file in his hand and before he announces the result, he gives us a 2-minute long speech about how we have come so far and how we have excelled and performed our utmost, our best to our abilities, and how this is not the end of our journey. And he tells us that we are capable of different things if we do not make it into the SSB. तो भोपाल में ऐसा स्पीच देने के बाद those students were already speculating क्या हुआ अगर पूरा बैच वो शॉर्ट हो जाए, it would be funny. तो उनकी मैंने ज़्यादा सुनी. फर्स्ट एसएसबी में हर किसी को लगता है वो शेर है. बिल्कुल. तो मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठा था. आज तो मैं रिकमेंड करूंगा. आज की सिनेरियो क्या होने वाला था? उसके बाद दिवाली भी थी. उसके बाद दिवाली सीनियर्स थी भोपाल में से बात करके वो भी बोले थे तेरा रिकमेंडेशन को हो जाएगा because they were already recommended. So yes, move. बाकी मेरी कॉन्फ्रेंस तो उधर भी जब रिजल्ट अनाउंस हुआ the officer he took the file and he suddenly kept it behind him. And एक sanity's position में बोलते हैं gentlemen, as for the result there are no recommendations for the thank you. And he exited. जब ये हुआ You all were standing there only. I was bewildered. Did it really happen? वो exit करके मुझे लगा prank कर रहे हैं हमारे साथ. They came crashing down and एक खुशी भी थी. कोई सारे रले हैं साथ में. कोई हमसे बुरा नहीं है, कोई हमसे ऊपर नहीं है. तो सारे साथ में उस बस में बैठ के वापस. But in Allahabad, I was eagerly waiting because obviously my preparation and my performance from the last SSB it was better. As soon as he finished his speech, he started calling out the chess numbers and he asked us to acknowledge them. So the first chess number he called out it was chess number 13. So conference speeches start हुई थी and the first chess number he called out was 13. मुझे लगा कि यार मिस हो गया. Randomly choose. Chess number 13. ये होता है Randomly choose कर लेते हैं and screening है वो randomly choose करके मेरे जब chess number skip हुआ मैं already पास.
जब रैंडमली चूज करते हैं वो शायद There is a possibility. Very acknowledged, and the very next test number was mine. He called out just number 16, and I was just showed me and बोल रहा just number 16. मैं खड़ा हुआ, I acknowledged my details. Then I stood over there, and the was just number 17. But see, there was just number 23 and just number 20. So the five of us we were recommended. Okay. And he asked the other students not to clap or do anything. काफी अमेजिंग होती है बिकॉज हमें खुद यकीन नहीं आता कि रिकमेंड हो चुके हैं जो फर्स्ट रिकमेंडेशन लेवल किसी को मिलता है तो उधर खड़े खड़े मैं सोच रहा था कि अब तो लाइफ में ऐश लेकिन as soon as interviewing in the meeting hall, सर अपने साथ इतना बड़ा बंडल लेके आए पेपर्स का इतने सारे पेपर्स होते हैं वो जो फीलिंग ऑफ जॉय होती है वो इट ओनली an hour at maximum उसके बाद it comes down and एसएसबी में स्टे करते करते आप पक जाते हैं This was the part. Coming to your medicals, कितना लंबा प्रोसेस था एंड वाज इट डे आफ्टर और बीच में गैप पड़ा था कितने दिन लास्ट किया यूजुअली इट इज सेट इट इज 5 for 5 days क्या वो 5 दिन के मेडिकल्स चले या फिर इट लास्टेड फॉर 10 days बिकॉज़ इट कैन गो अप टू 10 days तो आपको कितने दिन मेडिकल्स मिले और आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं ये बात भी जरूर बताइए तो मेरे मेडिकल्स they started right after we were done with the very next day. It was on March 17 that we went for our first medical. उधर ही MH Allahabad military hospital. तो मेरे medicals they started on 17th and they ended on 29th. 10 days only They went beyond 10 days and SSB and during medicals आप कुछ नहीं कर सकते आपको बोर करना पड़ेगा तो फॉर्चुनेटली हमारे फोन्स दे दिए वापस लेकिन हर बोर्ड नहीं देता है तो उधर हॉस्पिटल में बैठे बैठे हमारे पास कुछ काम नहीं होता था वी वर अबाउट 15 to 20 स्टूडेंट्स अलग अलग बोर्ड्स के साथ में मेडिकल चले जाते हैं हम वेट करते रहते थे तो आफ्टर अबाउट 3 to 4 hours उसके बाद एक डॉक्टर आता था एंड फिर the process it's stretched up to 12-13 days. लास्ट में मेडिकल्स का भी एक डर रहता है कि आप ही मेडिकली फिट आप ही अनफिट क्या होगा तो उन लास्ट से कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले हमारी कॉन्फ्रेंस शाम को हुई थी लेकिन प्रेसिडेंट वाजंट फ्री द मेडिकल बोर्ड प्रेसिडेंट बेसिक काफी बिजी होते हैं तो we were told about our unfit and fit candidates out of us 20 there were only 4 fit I was unfit for my overweight and hilly area and varicose vein भी दे रखा है मुझे but fortunately TR yeah you were given TR and given time period of 45 days 42 days after my मेडिकल्स वो एक घर पे जाने की जल्दी रहती है कि बस अब तो घर भेज दो अब तो we all rushed back to our homes and as soon as I came back home घर पे हर कोई मिल के जा रहा है और रिलेटिव्स आ रहे हैं अब तो सर हम गए हो तो हमारी कैंटीन से सामान ले आना ये सब एंड थिंग्स ऑल तो ये सब होता है
सो बहुत अच्छा तरीके से आपको निखिल ने गाइड किया. सो अपनी पूरी जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच टिल ही मेड इट टू हिज एसएसबी, ये पूरी कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, बिकॉज इट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, कट शॉर्ट इन 20-30 मिनट जितना भी आपने इंटरव्यू देखा होगा. बिकॉज ये आज का सपना नहीं है, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली है. ही हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर इट एंड रियली हार्ड फॉर इट. जो उसको मिला है, जो पहुंचा है, जो बना है अफसर, ही वाज रियली केपेबल. ऐसा कोई नहीं होता अनफॉर्चुनेट जॉब देखोगे जिसको आप कहोगे कि वो केपेबल नहीं था. बिकॉज एक जो सक्सेस की रात होती है ना, उससे पहले कितनी रातें लगी. ठीक है, तो इट इज डोंट जज एनीबॉडी कि भाई ये फौजी बन गए तो डिजर्व नहीं करता. तो बेटा आप जज करने वाले तब तक नहीं हो सकते जब तक आप खुद फौजी नहीं बनते. आई ऑलवेज से ईदर बी अ फौजी और रिस्पेक्ट अ फौजी, दैट इज यू मस्ट डू. ठीक है, सो बहुत अच्छा लगा निखिल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, एंड बहुत अच्छे से आपने गाइड किया. सो एक कुछ लास्ट कीवर्ड्स आई वुड लाइक टू से कि भाई आप जो है कुछ कहना चाहेंगे, फाइनल वन लाइन में कंक्लूड करना चाहेंगे कि अगर बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है either for his interview part or his written part, एक लाइन में अगर आपने सम अप करना हो या कुछ उनको मोटिवेशन देनी हो थोड़ी सी, सो एक लाइन में देकर जरूर उनको मदद करिए. I would only say never worry and be who you are, be your own self and कभी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, be natural. थैंक यू. निखिल ने बहुत अच्छा हमारे साथ इंटरव्यू किया एंड आई लव्ड इट. सो ये हमारा बच्चा था निखिल डागर एंड ही इज रिकमेंडेड फ्रॉम एसएसबी इलाहाबाद. सो इट वाज नाइस नोइंग यू. एंड निखिल ने जैसा कि बताया, इट इज ऑलवेज यू वर्सेस यू. ठीक है निखिल, थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir.